दशकं 46 श्रीकृष्णस्य वदने यशोदया लोकानां दर्शनम्। अयि देव पुरा किल त्वयि स्वयमुत्थानशये सनन्दये परिजृम्भणतो व्यपावृते वदने विश्वमचष्टवल्लवी पुनरप्यतबालकैः समं त्वयि लीलानिरते जगत्पते फलसञ्चयवञ्चनकृदा तव मृद्भोजनमूचुरर्बकाः अयि ते प्रलयावधौ विभो क्षितितो यादि समस्तभक्षिणः मृदुपाशनतो भवेत् इति भीता जननी चुकोपसा अयि दुर्विनयात्मकत्वया किमु मृत्सा बत वत्स भक्षिता इति मातृगिरं चिरं विभो विततां त्वं प्रति जग्निषे हसन् अयि ते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेद्वदनं विदार्यताम् इति मातृविभत्सितो मुखं विकसत्पद्मनिभं व्यधारयः अपि मुल्लवदर्शनोत्सुकां जननीं तां बहु तर्पयन्निव पृथिवीं निखिलां न केवलं भुवनानप्यखिलान्यदीदृशः कुहचिद्वनमम्बुदि क्वचिदभ्रं कुहचिद्रसातलं मनुजादनुजा क्वचित् सुराः ददृशे किं न तदा त्वदानने कलशाम्बुधिशायिनं पुनः परवैकुण्ठपदादिवासिनं स्वपुरश्च निजार्भकात्मकं कतिदा त्वां न ददर्श सा मुखे विकसद्भुवने मुखोदरे ननु भूयोऽपि तदा विधाननः अनया सुटमीक्षितो भवान् अनवस्थां जगतां बतातनोत् धृततत्त्वधियं तदा क्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन् अद्भुतबाल पाहि मां श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।